Hello everyone, welcome to blinkX by JM Financial's monthly exclusive webinar series by Rahul Sharma. Rahul Sharma is the head of technical and derivative research with JM Financials, and today he will share with us the upcoming trends for the market. तो आने वाले समय में जून के महीने में मार्केट्स का रुख कैसा रहेगा, कौन से सेक्टर्स में आपको निवेश करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स में आपको निवेश करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी राहुल शर्मा आज हमें देंगे. ओवर टू यू राहुल, वेलकम. Thank you so much, Shweta, for that introduction. सभी का हार्दिक स्वागत है. ये पहली बार है जब हम ऐसा एक मंथली वेबिनार कर रहे हैं जहां पर पूरे महीने का एक तरह से जो विश्लेषण है, क्या मार्केट रहा, क्या मार्केट हो सकता है, और खास करके कौन से वो एरियाज हैं जहां पर अगले इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में बनेंगे, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे. So I'll keep it both Hindi and English for the benefit of all. We have designed this small webinar in a way where we'll have 30 minutes of, we'll take you through our views on the market, and the next 10 to 15 minutes we'll have a Q&A session where we will try to address your queries and questions in the best possible way. So very warm welcome to each one of you. Do remember to subscribe to our channel. We are present on Telegram, Twitter, LinkedIn, you name it, and we are there. Now, the biggest question on everybody's mind is, क्या ये all time high जल लगने वाला है? क्या मार्केट यहाँ से यूटर्न तो नहीं मार लेगा? So हमने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार किया है, छोटे-छोटे इनफैक्ट जो क्लूज मार्केट देता है टाइम टू टाइम, उसको हमने कोशिश की है कि एक साथ लाकर आपको एक पिक्चर दिखा सके कि यहाँ से आने वाले समय में मार्केट कैसा रहेगा. सो देखिए, आइए दोस्तों देखते हैं कि हमारा जो मार्केट का करंट पोजीशनिंग है वो इस वक्त कैसा है. सो देखिए, सबसे पहले तो एक कहावत थी, सेल इन मे एंड गो अवे. सो ऐसे बोला जाता था कि मई महीने के बाद मार्केट बढ़ता नहीं है. मार्केट मई में जो पीक बनता है उसके बाद जनरली सेलिंग ऑफ देखने को मिलता है. और अब की बार क्या ऐसा रहा है? सो लास्ट 3 महीनों से FIs have started buying in the cash segment, especially in the month of May, where they've bought around almost 28,000 crores worth of equities. So this time around, it has been very much different, especially because we were coming from around 4.5 months of underperformance, especially with respect to the global markets. So what has happened is FIs, which were at one point in time very, very aggressively short on the market, at one point in time they had lifetime high short positions in index futures. They have trimmed down their positions in a big way. And now, in fact, आप नीचे जैसे आप ग्राफ में देख सकते हैं, ये पोजिशनिंग जो है इंडेक्स फ्यूचर्स में कोई भी कमिट नहीं कर रहा है कोई बड़े डायरेक्शन ट्रेड के लिए. सो एवरीबडी इज प्लेइंग. पहले आप न FIs इंटरेस्टेड है कोई बड़े पोजीशन लेने में इंडेक्स फ्यूचर्स में, न DIIs, न रिटेल, और ना ही प्रॉप डेस्क जो है. तो कहीं ना कहीं इंडेक्स में जो ट्रेड्स है, बड़े डायरेक्शनल बेट्स है, वो नहीं लिए गए, और जो भी बेट्स या जो भी ट्रेड्स लिए जा रहे हैं वो खास करके स्टॉक्स में लिए जा रहे हैं. And this is one reason why stocks have been doing fantastically well. In fact, the market breadth has improved significantly over the last few trading sessions. So clearly, the month of May was one where FIs were buyers, and there was no significant shorting interest, especially in the from the institutional front in the index derivatives. So, where does that bring us? सो पिछले महीने में एक सिंपल में मंथ टू मंथ कंपैरिजन करूं तो रियलिटी और ऑटो, ये दो सेक्टर्स है जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई इन्होंने. These were the star performers for the month. 13.78% return for real estate. Nifty Auto Index was up by 13%, and in fact, the performance is the gap between the first and second rank and the third rank is quite huge. So which are the areas which underperform? So Nifty PSU is one sector which underperformed in a big way. All the PSU banks were on a back foot and no real returns were delivered. Oil and gas is another sector which was an underperformer. So was Nifty Financial Services. Now, so far we've seen that
Bank Nifty has led this rally. Banks and financials have led this rally. But for a very brief period, for about 20-25 odd trading sessions, we've seen auto and real estate really take the leadership away from the banking names and financial names, and delivering it for the Nifty. Now, let us take it a step further and see how are we positioned as compared to global markets, as compared to how are we positioned in terms of the broader indices. तो ब्रॉडर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो निफ्टी, हमारे जो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडाइसेस है, इन्होंने बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाई है। इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स तकरीबन 11.5-10% ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स तकरीबन 10% ऊपर है, और निफ्टी ने तकरीबन 5% के आसपास का रिटर्न दिखाया है। और इस पीरियड में खास करके यूएस मार्केट्स में जो डाउ जोन्स इंडेक्स है उसने अंडर परफॉर्म किया है। तो आपको याद होगा हमारे प्रीवियस अपीयरेंसेस में हमने व्यू शेयर किया था कि 4 महीने थे जब यूएस मार्केट्स ने इंडिया से अच्छा किया था। अब वो अगले 2 या 3 महीने हैं, 4 महीने, जहां पर इंडिया विल डू बेटर देन द यूएस मार्केट्स, एंड दिस इज क्लियरली रिफ्लेक्टिंग द डाउ जोन्स अंडर परफॉर्मिंग, द निफ्टी 500 डूइंग मच बेटर देन इवन द S&P 500 इंडेक्स, एंड द मिड एंड स्मॉल कैप्स लीडिंग द रैली। अब जब मिड और स्मॉल कैप में एक्शन आता है, it means hot money is back into the market. Hot money is kind of the high momentum money is into the market, where retail loves this segment a lot. So retail को यहाँ पर काफी अच्छा अट्रैक्शन रहता है, और क्यों ना हो, क्योंकि स्टॉक्स में हमने देखा है कि 10-15-20% टाइप के मूव्स बहुत ही वाइडली यहाँ पर देखे गए। अब निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो पूरे के पूरे पीरियड में आप ये अगर नीचे ग्रीन लाइन देख पा रहे हो तो यहाँ पर ये मार्केट ब्रेड थ्रस्ट इंडिकेटर है। ब्रेड थ्रस्ट इंडिकेटर मतलब क्या है कि आपके जो 500 स्टॉक है निफ्टी स्पेस में, निफ्टी 500 इंडेक्स के, उनमें से कितने स्टॉक ऊपर है, कितने स्टॉक नीचे, कितने स्टॉक न्यूट्रल है। तो ये इंडेक्स बता रहा है कि जो मार्केट ब्रेड्थ है, जो एक तरह से जो थ्रस्ट है, मोमेंटम है इन स्टॉक्स में, इट इज as good as that we've had in the recent times. In fact, previous time जब निफ्टी 18,800 के ऊपर गया था, उस समय भी मार्केट ब्रेड थ्रस्ट इतना बढ़िया नहीं था जितना अब की बार देखने को मिल रहा है। तो ये वाले मूव में कंसोलिडेशन भी हुआ छोटा मोटा। हमने 4-5 सेशन देखा, निफ्टी कूलिंग ऑफ करता है, फिर ऊपर चलता है, कूलिंग ऑफ करता है, फिर ऊपर चलता है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट जो सेंटीमेंट है वो यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ दिखा है हमको। और साथ ही में एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है 18,500, हमने कल के दिन में कहा था कि 18,500 का निफ्टी में सपोर्ट है, बाई करके चलिए, वहां पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया। और मेरे हिसाब से जब तक 18,500 का लेवल डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होता है, निफ्टी में स्ट्रक्चरली यहाँ पर कोई तरीके की घबराने की जरूरत नहीं है, एंड वी फील निफ्टी इज हेडेड टुवर्ड्स द 19,000 मार्क एज एन इमीडिएट टारगेट फॉर द शॉर्ट टर्म. Now, what if you are a medium term investor? What if if you have a monthly outlook? I think the way we are positioned, there is a good chance that the Nifty crosses 19,000 as well. So in terms of numbers, I think 19,500 is where we see the Nifty in the next one and a half months time frame. And the better thing to do is, instead of buying Nifty, there are some sections of the market, some parts of the market which have underperformed. एंड रिस्क रिवॉर्ड जो है इन सेक्टर्स में बहुत फेवरेबल है। तो इंडेक्स में आउट एंड आउट यहाँ पर बाय करने की जगह पर आप इन स्टॉक्स में और इन सेक्टर्स में अगर आप फोकस करेंगे तो आपका रिटर्न यहाँ पर काफी बेहतरीन हो सकता है। तो उनमें से एक सेक्टर ऐसा है जिसने पूरे मई के महीने में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो है PSU बैंक्स। देखिए ये एक रिलेटिव ग्राफ है, इसमें हमने क्या किया है, PSU बैंक इंडेक्स डिवाइडेड बाय बैंक निफ्टी किया, यानी कि PSU बैंक इंडेक्स अगर अच्छा करता है तो ये ग्राफ ऊपर जाता है, PSU बैंक इंडेक्स अगर नेगेटिव करता है तो ये ग्राफ नीचे जाता है। अब इस ग्राफ में एक बुलिश सेटअप है, यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम एक तरह से कर्व बनाने की कोशिश की गई है, और मुझे लगता है कि ये रेशियो ऊपर की तरफ बढ़ने को है। अब अगर ये ऊपर चलेगा यानी PSU बैंक्स बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेंगे। तो प्राइवेट बैंक्स में हमने देखा कि बहुत ही बेहतरीन मूव था। अब मुझे लगता है कि PSU बैंक्स की बारी है आने वाले एक महीने में जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। और दूसरी बात यह है कि PSU बैंक्स में रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, यानी कि महीने भर में आपका निफ्टी 17,600 वाला 18,600 18,800 हो गया, लेकिन PSU बैंक्स आज भी वहीं पर अटके हुए हैं। तो अगर निफ्टी करेक्ट भी होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर करेक्शन कम होंगे, और निफ्टी कंटिन्यू भी करता है तो यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। टेक्निकली ये एक सेक्टर है जहां पर हमें लगता है अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद आते हैं और एक सेक्टर पर जहां पर हमें लगता है कि पोटेंशियल मोमेंटम दोनों बहुत ज्यादा हो सकता है, और वो है मेटल्स। Whenever metals move, they move big time.
The moves are very ferocious, and as we've seen in the past, this is a very cyclical sector. So I think this cycle has now turned, and there is a good chance, slowly, gradually, the sector changes gears. So this is the first week where we've seen the sector sustaining above its 200-day moving average, the long-term moving average. And now we feel that slowly, gradually, this sector should head towards its previous highs. The previous highs were around 6,900 odd for the metal index, which is approximately 950 points if we take the current level. So we feel that there is a good upside headroom, and whenever this headroom is filled, it generally happens with very high momentum. So if momentum and big upside is what you're looking for, I think metals is one sector where we feel the traction can be very good. So you can keep your eyes on the metal names, something like a Tata Steel, Hindalco, something like a JSW Steel. All of these are very good technical setups, and these are macro views. So I'm not telling you these stocks will go up in 1 or 2 or 3 days. This is a monthly view that we are discussing. So from a 1 month perspective, there is one sector which looks pretty good on the charts as far as the sectoral outlook is concerned. Now, there is another sector which we have been bullish since a very long time. Since in December last year, we had identified, January this year, we had identified the public sector enterprises, which has given a breakout from its 10 years of consolidation. तो एक डेकेडल ब्रेकआउट हमने देखने मिला है ये साल में पीएससी इंडेक्स में, और मुझे लगता है ये सिर्फ एक शुरुआत है, और मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में यहाँ पर और भी अपसाइड देखने को मिलेगा. तो PSC में the best pick that we have is NTPC. NTPC looks very robust on the charts. Then you have the ONGCs of the world. Then you have the oil marketing companies. I think we've shared that basket on our social media platforms. We can share it once again. The PSC space is another one where investors will be interested in going on the long side. Now, these were the 4 sectors where we felt that there could be that next investing trading opportunity. So just to recap, first we have the PSU banks which are expected to do well. We have the metals which are expected to do well, and we have the public sector enterprises which can continue to do well. So these are the sectors which we feel that there could be the next alpha generating opportunity. Now, which are the sectors where we have to be cautious? So, we've always taken, whether it's a down move or whether it's a big up move, we've taken everything with a pinch of salt, and, we've tried to keep ourselves level-headed. And in an attempt to do so, some of our research, indicates that what we've seen in mid and small caps, जो खास करके हमने पिछले 4-5 हफ्तों में moves देखे हैं, mid और small cap में ये बहुत ज्यादा overheated है. यानी कि जो current moves है, उनके targets आ चुके हैं. तो अगर आपके पास पोर्टफोलियो में मिड कैप स्टॉक्स है, अगर आप अच्छे मुनाफे पे बैठे हुए हो, तो प्लीज टेक प्रॉफिट्स इन द मिड एंड स्मॉल कैप्स. दोनों इंडाइसेस, इनफैक्ट मिड कैप 100 इंडेक्स और स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, दोनों के RSI 87-88 की रेंज में है. दोनों ओवरहीटेड है. दोनों में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस हमने देखी है. यस, हो सकता है परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक डिप आएगा, और डिप आने के बाद आगे का मूवमेंट कंटिन्यू हो सकता है. तो स्पेशली फ्रॉम प्रॉफिट बुकिंग पर्सपेक्टिव, वी आर एडवाइजिंग टू टेक प्रॉफिट्स इन द मिड एंड स्मॉल कैप्स. Another sector which is having the time of its life is the auto index. So auto index has done phenomenally well. All the auto names, even the laggards have done well in this rally. And we feel overall as a sector, this index has become very overrated now. The daily RSI is above 88. It has achieved all its technical targets as far as the current setup is concerned. And if you see historically, every time the RSI has gone above 80, it has been good profit booking for the auto index. And historically speaking, also any sector, any index, if we talk of, and if we have these overbought conditions, it's advisable to take profits and move on to the next sector, which provides a relatively better risk reward, a relatively better opportunity for your capital. Now, coming to the reality space, so very similar setup in the reality space as well. Reality index is one index, which has done extremely well along with the other indices, and we feel this is also one sector where profit booking is advisable. So one can look to book profits, one can look to switch between something like a reality, probably can switch to financial services, or can switch to PSCs, or can switch to public sector enterprise, public PSU banks. So what happens is not only you're booking profits, but also ensuring
that you are readying your money for the next available opportunity in the market. So this is one sector where we feel that there is a good chance that it's better to take money off the table. And lastly, FMCG. Now FMCG has seen an all-round buying. Even this is similar lines, trading at live highs 51,000 and above. FMCG also calls for a profit booking where one can look to take money off the table and wait for a considerable dip for any kind of a re-entry. And this is one of those rare phases where broader market has done well, FMCG has done well. Historically, FMCG has been a defensive sector, which means जब market गिरता था, FMCG में हमने traction positive देखा था, but अब की बार broader market भी चला है, साथ में FMCG भी चला है, तो defensive जो है वो भी participate कर रहे हैं, और जब भी ऐसा market हो और आप अगर profit में बैठे हो, तो it is advisable to book some profits. Now, before we proceed on to the next slide, what we want to re-emphasize is every month we will have a webinar like this. First week of every month, we will have a monthly outlook coming up on a similar platform where we'll be sharing our views and we'll be sharing our next possible investment or trading opportunity. Do subscribe to our channel on YouTube, on Telegram, Twitter, and all, get all the latest updates delivered to you on your social media platforms. So coming to the most important slide, which is one actionable idea. So, what is that one actionable idea? What is JM Financial's house view, which is a top pick in terms of, if I have a 1 month time frame, if I want to invest fresh capital, what is that stock idea which looks very good? So, we've, the entire team went through this exercise. We put our heads deep inside and figured out that, there are a few ideas, especially from the Nifty 50 space, which look very good. So Reliance Industries, this is the stock that we would recommend in today's monthly outlook. This stock, has not performed. In fact, it has underperformed the broader market in a big way. Around 2400, there is a very strong base for the stock. It's trading close to 2500. We feel that there is a good 10% upside possibility in Reliance Industries. One can look to buy Reliance with a 3-month time frame, 3-month time horizon, 1 to 3 month kind of a time horizon, and where we feel 2650 and 2800. These are the two levels one can keep an eye on for the upside potential, and Reliance can be bought with a stop loss placed at 2350. So around 150 rupee of downside risk, around 320 rupees of upside potential. Reliance can be had. 1:2 risk reward, and we feel on a relative scale, this is one of those multi-sector stock. This stock represents not only the oil and gas or the it's actually a conglomerate which is representing a lot of businesses in India. And if we simply do a statistical analysis of the performance of Reliance and Nifty, there is a big gap that has developed in the recent times. So we feel this gap will get filled, and one can look to go long in Reliance, especially at these levels, and we expect the stock to play a catch-up rally in the coming weeks to a couple of months ahead. So this brings me to the end of our presentation for today. Thanks for sharing. Thanks for getting time out from your busy calendars, and I hope I was able to add value to your time. We can now open the floor for Q&A. Look forward to your questions. Thank you, Rahul, so much. And we have a lot of questions on our YouTube channel. And before I take the questions, I would want to just, speak out some appreciations that we have received from our viewers. So Sandeep Agarwal ji कह रहे हैं कि आपके निवेश के जो आपने आइडियाज दिए थे, तो 25% रिटर्न जो ईयरली स्टॉक में मिला है, even if the Nifty, even if the markets, have come to 16,000 levels. So he is thanking you for that. And also Rajesh Aroja ji bhi bata rahe ki your guidance has always been perfect. So he also wants to thank you. So we've received a lot of appreciation, and we know people look up to you for the markets and the guidance that you give, and you have never failed on that. So now let me take some questions. So there was one question is that, कि आज आरबीआई पॉलिसी का जो स्टेटस को जो स्टैंस आया है, तो आज हमने थोड़ा सा ये रियलिटी स्टॉक्स में प्रेशर देखा था, तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? ये देखिए, ओवरऑल सिर्फ एक कंसर्न जो आरबीआई के पास है कि जो एल नीनो का इफेक्ट है, जो बारिश थोड़ा सा आगे पीछे होने का इफेक्ट है, उस वजह से इन्फ्लेशन कहीं वापस से आके इनको ट्रबल ना करे,
तो थोड़ा सा आई थिंक बैक ऑफ द माइंड ओवरऑल मार्केट को और आरबीआई को ये चिंता जरूर है. बट ओवरऑल अगर इस चीज को अगर हम निकाल दें तो डोमेस्टिकली we never had the problem which the West had faced due to excessive printing of money. We never had that inflation as high, and we never had to increase our rates so aggressively. So I think broadly, if the current situation, the way it is shaping out, if it does play out, RBI essentially will not be raising any rates. It basically marks an official pause to the rate hike, and what we feel is this may be a start of a maybe a pause for another month, and then we will start seeing a decrease in the interest rates. So that should actually bode well for the consumption in all. And we've seen the 2000 rupee notes getting banned. Immediately that money is coming back into the system some way or the other. It is sort of impact helping the consumption go up. So my sense is markets have completely discounted that, completely factored in the today's after the initial volatility that we had. And nowadays we've seen, whether it be the Fed event, whether it be a RBI event, algos, and plus all the smart traders that we have across the world, they factor in that entire thing within a day. So I think from tomorrow onwards it will be back to normal, where global cues are, will be following them. As of now, it seems like global cues are pretty healthy, and we should be continuing northwards. And reality as a space, I think it's a very good time to be taking profits, because markets are always one step ahead of the time. And markets have essentially factored in this current upcycle, which is why we've seen the real estate stocks do so well, reality index do so well. So we would stick our neck out and say, take some profits here. If there is a considerable dip that happens over the next month or so, maybe we can look for re-entry, but this is the time to book profits. Correct. So the next question is from Dr. Mukundan Sheshadri. He is asking about the outlook on IT index, and when can we start accumulating it? Yeah, so IT index has been one of our key areas which has sort of taken a beating in the recent times, which has sort of tried to recover. And I think if you have like a 1 year time frame, IT is 1 year plus time frame, IT is the sector to be investing in. It was a growth sector. Now it is slowly, gradually sort of considering what is happening at a global level, especially in the West. It seems like most of the negatives are priced into it, and maybe a couple of quarters here and there, eventually we should see the IT index sort of doing well from here. One trigger immediate basis that can happen is the Fed event that is scheduled this month. If Fed says officially we are pausing the interest rate hikes, that should bode well for IT as a sector, because what will then happen is, at least it will bring in clarity. Okay, at least the interest rates or the cost of doing the business for the US companies will not go up, which means they can have more clarity on their expenditure. So that will bode well for the IT stock, and they'll at least stop falling. So my sense is, if you have like a 1 year plus kind of a time frame, this is a good time to be buying IT stocks. TCS is one of our top picks which can be bought for investment, and we feel that there is a good chance that IT sees a turnaround from these levels. Okay, so we have received a lot of questions on the short-term targets or views for Bank Nifty, if Bank Nifty will touch 45,000. Yeah, so long term में सभी कुछ अच्छा लगता है, but short term में पैसा बनता है, and who doesn't like a quick money? So देखिए, बैंक निफ्टी में 45,000 का टारगेट जब तक हम 43,700 के ऊपर हैं, मेरे हिसाब से टेक्निकली यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर. आज हमने नेगेटिव रिएक्शन जरूर देखा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक ये लेवल टूटता नहीं है, देयर इज अ गुड चांस वी हेड टुवर्ड्स द 45,000 मार्क. और देखिए, सेक्टर लीडर है, मतलब अगर हम थोड़ा सा मैक्रो पिक्चर ले तो बैंकिंग इंडेक्स ने लीड किया है. बैंकिंग के नंबर्स पिछले क्वार्टर में बहुत जबरदस्त थे. आई थिंक दे शुड कंटिन्यू टू डू वेल. In the very short term, I think it's best to have a stop loss at 43,700 and go on with your long trades. Secondly, breakout level 44,500 के ऊपर. Is it 44,500 break होता है, मेरे हिसाब से you can add up to your long positions. First level or first target for the Nifty inside is 45,000. Above that, I think 45,200, 45,250 is very much a likelihood. और ओवरऑल स्ट्रक्चरली अगर हम बात करें कि भाई अगले 6 महीने में बैंक निफ्टी क्या लगता है, आई थिंक दिस इंडेक्स इज हेडेड फॉर अ टारगेट ऑफ 50,000. सो there is still there are long legs to go for this index.
And as long as there is no real concerns on the earning side, we believe that this sector should continue to do well. Overall, Nifty, we are bullish for 19,000 plus, and that is in sync with the Bank Nifty view that we have. So another question that we have received is your views on the defense sector and any particular stocks that the viewers should be looking at investing in the sector. Yeah, so defense has been quite a turnaround, especially in the last 12 odd months. The way Hindustan Aeronautics, the Bharat Electronics, some of the names have done well. Now, technically speaking, the risk rewards are not great at these levels. It's best to wait for a dip to buy into them. And whenever you see a sector or a stock hitting headlines, like headlines for the good, making new life highs, or for the good things, it is generally advisable not to chase the stocks, because what happens is most of the market is already into it. These have become overcrowded stocks or overcrowded sectors. So it's best to wait for a dip for any kind of a cooling off to be done before re-entry or fresh position built up. So I would be a buyer on dip in Hindustan Aeronautics. That remains our top pick. I would be a buyer on dip in Bharat Electronics. It's best to wait for a dip, not chase these stocks, especially given the crazy run up that we've seen in the last few days. Yeah, so also private banks में लोगों का सवाल है कि कोटक और HDFC बैंक they have not been performing, तो आपका प्राइवेट बैंक सेक्टर के लिए क्या व्यू रहेगा? देखिए, प्राइवेट बैंक में काफी बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, मतलब अक्रॉस द बोर्ड सभी ने नहीं किया, लेकिन जैसे इंडसइंड हुआ, जैसे छोटे बैंक जैसे IDFC फर्स्ट बैंक, हमने अच्छा मूवमेंट देखा है। HDFC बैंक में मुझे लगता है कि अभी भी उसके ऊपर का टारगेट आना बाकी है। 1600 रुपए के आसपास रिस्क रिवॉर्ड वापस फेवरेबल है लॉन्ग पोजीशंस के लिए। मुझे लगता है कि 1800 रुपए का टारगेट लाइक महीने भर में HDFC बैंक में देखने को मिल सकता है। 1600 के आसपास आप बाय कीजिए, 1540 का स्टॉप लॉस लगाइए। मेरे हिसाब से HDFC बैंक इज द वन टू गो फॉर। कोटक बैंक मुझे थोड़ा कम समझ में आता है, बहुत ही वोलेटिलिटी रहती है स्टॉक के अंदर। इट्स बेस्ट टू आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन दिस, बिकॉज टेक्निकली जो हमारे सेटअप से वो वहां पर फॉलो नहीं हो रहे, बट HDFC बैंक और रिलेटिव स्केल इज अ बेटर बेट टू बाय। तो HDFC बैंक को बाय कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। आई थिंक 1600 रुपए में रिस्क रिवॉर्ड बेहतरीन है। हमारे पास स्टॉक स्पेसिफिक काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे व्यूअर्स से। मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि हम सारे स्टॉक्स का तो यहाँ पर नहीं ले पाएंगे गिवन द टाइम लिमिटेशन दैट वी हैव, बट यू कैन ऑलवेज राइट टू अस एंड वी विल एंश्योर दैट वी गिव यू प्रॉपर व्यूज. We'll check with Rahul and all his views. You can write to us, reach out to us on our social handles, and we will surely ensure that all of you get the views on the stocks. एक और जो हमारे लिए क्वेश्चन है राहुल, NBFC सेक्टर पर आपका व्यू? या देखिए, NBFCs में लाइक ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमारा आउटलुक पॉजिटिव है। NBFCs में खास करके हमें लगता है कि अभी भी मोमेंटम जूस अपसाइड जो सब बाकी है। इनफैक्ट पूना वाला फिनकॉर्प का सेटअप हमें इंडिविजुअली बहुत पसंद आता है। हमने इनफैक्ट तकरीबन 300 रुपए के लेवल से लगातार इसे रेकमेंड किया हुआ है। 350, 360, इनफैक्ट आज 360 का लेवल इस स्टॉक ने छू लिया। मुझे लगता है कि अगर आपका 1 ईयर का होराइजन है तो 500 रुपए तक के लेवल्स आपको पूना वाला फिनकॉर्प पे देखने को मिल सकते हैं। इमीडिएट बेसिस में मुझे लगता है 380, 390 तक के लेवल्स पूना वाला फिनकॉर्प में आने चाहिए। अगर आप फ्रेश भी बाय करना चाहते हैं तो 340 का स्टॉप लॉस लगाकर बाय कीजिए पूना वाला फिनकॉर्प। ओवरऑल NBFCs में आउटलुक और रुझान दोनों पॉजिटिव है। जैसे कि आपने मेटल सेक्टर के बारे में बताया, तो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपको जून मंथ में मेटल सेक्टर में ये प्रेशियस मेटल्स के लिए आपका व्यू? या देखिए, जो बेस मेटल्स है, यानी कि आपके कॉपर हो गया आपका, या मेटल स्टॉक्स हो गए, मतलब सिंस ये इक्विटी के बारे में, तो आई विल कीप इट रेस्ट्रिक्टेड टू इक्विटी। ओवरऑल मेटल एज अ सेक्टर विद द चाइनीज सिचुएशन डेवलपिंग, ओवरऑल generally there are a lot of things wrong in China, but so far whatever we've heard in this year, things have been improving. So I think that should bode well for the metal as a sector, which is the reason why we've said that cyclical plus high momentum metal is one space to go for. So outlook हमारा metals के ऊपर positive है। मुझे लगता है कि यहाँ पर metals के अंदर थोड़ा selective जरूर होना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ऐसे buy करके one sided move नहीं होगा, volatile move होगा। तो जैसे आपको प्रॉफिट मिले, एज अ ट्रेडर आप इन्वेस्ट कीजिए। आई थिंक that is the best way to say it. Invest with a trading mindset. I think that is the best strategy if you want to do metals investment. And I feel that in the next 6 months or so, we should see good traction continuing in the metal space. ऑटो एंसिलरी के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि इस सेक्टर में कैसे निवेश करना चाहिए, और ईवी थीम को प्ले करने के लिए अगर आप कुछ स्टॉक्स बता सकें तो।
जी हाँ, देखिए ऑटो स्पेस, लाइक ऑटो ब्रॉडली ऑटो हैज डन वेरी वेल। यहाँ पर मैं बुलिश नहीं रहूंगा, बहुत ज्यादा ग्रिड है यहाँ पर। ऑटो एंसिलरी में रब ऑफ इफेक्ट देखने को जरूर मिल सकता है। ईवी स्पेस में डेफिनेटली काफी अच्छा इंटरेस्ट है। इनफैक्ट कुछ नेम्स जैसे बॉश लिमिटेड हुआ, संधार हुआ, यहाँ पर हमने काफी ट्रैक्शन देखा है, काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस भी यहाँ पर देखने को मिला है। आई थिंक थोड़ी सी ये जो थीम है लाइमलाइट में जरूर है, बट एज फार एज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कंसर्न यू विल हैव टू बी सिलेक्टिव। सिर्फ कोई भी स्टॉक ऐसे ईवी वाला हो उसके पीछे ना जाए। आई थिंक बॉश एक अच्छा डाइवर्सिफाइड प्लेयर है, जहां पर ईवी के जो कंपोनेंट्स भी बनाती है, और F&O में भी है ये खास करके स्टॉक। तो आई थिंक अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है 3-6 महीने के व्यू के हिसाब से आपको बाय करना है, तो बॉश इज अ गुड बाय एट दीस प्राइसेस। और स्मॉल कैप्स के बारे में जैसे कि आपने बताया कि दिस इज अ टाइम फॉर प्रॉफिट बुकिंग, तो स्मॉल कैप के बारे में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो अभी रुकना चाहिए, या उसका कैसा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट होराइजन, किस तरीके से उसे इन्वेस्ट करना चाहिए? जी हाँ, देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स ने लाइक पूरे साल भर का जो एक बड़ा मेगा मूव था वो दिखा दिया है। मिड कैप इंडेक्स ने भी दिखा दिया है, और जनरली हमने देखा है कि जब भी ये गैप आपका लार्ज कैप और स्मॉल कैप के जो वाइड होता है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर लेना समझदारी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मैं ग्रीडी ज्यादा नहीं होऊंगा। यहाँ पर इनफैक्ट आपके पास पोजिशंस है स्मॉल कैप में, तो बुक कीजिए, पोर्टफोलियो में पुराने स्टॉक्स पड़े, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आप ये पूछेंगे कि मेरा स्टॉक स्मॉल कैप में कि मिड कैप में, कैसे आइडेंटिफाई करूँ? एनएससी इंडिया वेबसाइट पे जाइए, वहां पर इंडेक्स की क्लासिफिकेशन में आपको सारा का सारा जो क्लासिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। सो एज अ स्ट्रैटेजी आई थिंक अगर कोई ऐसा स्टॉक है जहां पर सेटअप काफी बढ़िया है, जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे स्टॉक, जैसे हमने देखा कि रेलवे स्टॉक्स में काफी अच्छा करंट रहा है पिछले महीने भर के अंदर, तो यहाँ पर हो सकता है कि कंटिन्यूड मोमेंटम जारी रहे। लेकिन ओवरऑल अगर आप मैक्रो व्यू ले मुझसे, तो मैक्रो व्यू के हिसाब से स्मॉल और मिड में यहाँ पर मैं एग्रेसिवली लॉन्ग नहीं रहूंगा। इनफैक्ट अगर आपका 100 रुपए का पोर्टफोलियो, आपके पास 30 रुपए, अगर आपके 20 रुपए स्मॉल कैप्स में इन्वेस्टेड है, तो आप 20 में से कम आप 10 निकाल ले, बाकी का 10 भले आप इन्वेस्टेड रहे, 50% प्रॉफिट एटलीस्ट यहाँ पर बुक कर ले। एक लास्ट में क्वेश्चन लेती हूँ, निफ्टी फार्मा पे आपका व्यू? जी हाँ, देखिए फार्मा में हमने एक तरह से बहुत ही अच्छा रिवाइवल देखा है। एक अंडर परफॉर्मिंग लेगार्ड सेक्टर था ये, बट खास करके जो डेवलपमेंट्स हुए रिसेंट यूएस एफडीए के हिसाब से, और जो हिसाब से हमने देखा कि खास करके जो ब्लू आइड बॉयज थे पुराने जमाने के, जैसे ग्लेनमार्क हो गया, जैसे औरोबिंदो फार्मा हो गया, इनमें हमने काफी अच्छा मूव यहाँ पर मोमेंटम आता हुआ देखा। डॉक्टर रेड्डीज में हमने काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखी। आई थिंक फार्मा में अभी भी अपसाइड बाकी है, आप सिलेक्टिवली यहाँ पर ट्रेड करके चल सकते हैं। औरोबिंदो फार्मा में हमें लगता है कि और भी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एज ए ट्रेडर आई थिंक वन ऑफ द बेटर सेटअप्स है। फार्मा इंडेक्स में मुझे लगता है कि यहाँ से तकरीबन आपको 5 से 6% की अपसाइड इंडेक्स में, और स्टॉक स्पेसिफिक आपको में भी 8 से 10% की अपसाइड और देखने को मिल सकती है। औरोबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, इन सबके सेटअप्स हमें अच्छे लगते हैं। साथ में सन फार्मा जो कि रिलेटिवली अंडर परफॉर्मर है, बट लगता है कि यहाँ पर भी रुझान जो है वो पॉजिटिव रहेगा। तो फार्मा माइल्डली बुलिश, इफ आई कैन से दैट, हमारा आउटलुक माइल्डली बुलिश है फार्मा स्पेस। और एक और क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग आया है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो एग्जिट हो गए रिस्ट्रक्चरिंग के कारण, और नॉट इन एफएनओ, एंड दे आर नॉट इन एफएनओ। देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 भी वन ऑफ दोज इंडाइसेस है जिन्होंने लाइक इस मूव का सारा जो टारगेट था वो अचीव किया। इनफैक्ट बहुत ओवरहीटेड है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 वो स्टॉक्स है जो निफ्टी 50 में आने का पोटेंशियल रखते हैं, इसलिए नाम में इनका नेक्स्ट 50 है। बट आई थिंक द बेस्ट थिंग टू डू इज, आपके पास पोर्टफोलियो में है बुक करे, आपके पास पोर्टफोलियो में नहीं है तो वेट करे करेक्शन आने का। इट्स बेटर टू बाय समथिंग लेट, बट महंगा मत बाय कीजिए, दैट इज व्हाट माय सजेशन इज। एंड नेक्स्ट 50 जो है वो फिलहाल काफी ओवररेटेड लग रहा है फ्रेश बाइंग के लिए। Right. So I think I was not able to take all the questions given the time crunch, but yes, I will ensure that next time I'll take more questions. Thank you Rahul so much. And जो भी questions हम नहीं ले पाए हैं, आप प्लीज, हमें सभी viewers से निवेदन है कि आप अपने हम questions हमारे social media handles पे get blinkx on Twitter, on Instagram, on YouTube, आप प्लीज हमें लिखिए और हम आपको
जरूर रिप्लाई करेंगे with the expert insights and views by Rahul Sharma. Also, please follow our social handles, subscribe to our YouTube channel and follow our social handles on Instagram, Twitter to get the latest updates from our in-house experts. And thank you so much. Thank you, Rahul, for your time, and thank you, viewers, for being here. And we look forward to having all of you in our next session, which will be in the month of July, wherein we will give you the update for the July month. What should be a straight trading strategy for the month of July? Thank you, Rahul. Thank you, everyone. Thank you, Shweta. Thanks all for your time. Thank you, and have a good evening ahead.